Welcome again in this today's last session, that is session number 4, and as you know that we are continuously determining the important thermodynamic parameter, and now I will discuss the free energy, and sometimes it is called the work function, because when you read thermodynamics, it is better to talk to the work function. And you know that there are two very important work functions. One is Helmholtz free energy or work function, another is the Gibbs free energy. One is A and second notation is G. सेम थिंग, क्योंकि आपने अभी कम से कम 3 थर्मोडायनामिक फंक्शन को आप लोग देख चुके हैं और मैंने वही बुक्स को फॉलो किया जो बुक्स आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में किया, इसलिए मैं बुक्स को यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ और मैं डायरेक्ट आपको समझाना चाहता हूँ। अब इसको अगेन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल्स में आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वगैरह समझाया जाता है, बहुत सारे फंडामेंटल इक्वेशंस होते हैं, बट these are all very small equations, but you have to understand all these equations. So first I will solve this equation. A is equal to E minus Ts. अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हम एंट्रोपी को पहले पढ़ाया और इंटरनल एनर्जी को पहले पढ़ाया, क्योंकि अगर इफ आई आस्क यू डिटरमाइन द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी with the help of partition function, इसमें भी वही बात है कि आपको मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन और मोलर पार्टीशन फंक्शन, जैसा आप चाहे कैपिटल क्यू भी आप लिख सकते हैं। तो वाई, एंड इट इज अगेन नो मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगेन हियर हमको यहाँ पे ई की वैल्यू को रखना है और एस अभी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला एंट्रोपी की वैल्यू को रखना है। विल गेट दिस फाइनल वैल्यू। इट इज वेरी सिंपल। सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी, सो इट इज, यू नो दैट G is equal to H minus Ts. So if you know the values of H, you can substitute, or you know H is equal to E plus PV. Sorry, H plus PV. H is equal to E plus PV. So in place of H, I can write that. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? E plus PV minus TS, isn't it? और हम क्या लिख सकते हैं? E minus TS is equal to PV and E minus is equal to A, so A plus PV. देखिए कितना इजी। A अभी हम निकालेंगे, A की वैल्यू हम पे रख देंगे। Now again, if I are talking about the number of moles, and you know that sometimes PV is equal to small n RT, so I can write also RT. I can also write Kn like that. So let me first solve that first part, which is very simple. But how do you determine the Helmholtz free energy? And again, इसमें कोई समझने की बात नहीं है. You have to substitute these values of E and S. But आपको इसको सॉल्व करने के लिए E की वैल्यू याद रहना चाहिए, S की वैल्यू याद रहना चाहिए, मोलर पार्टीशन फंक्शन के रूप में करेंगे तो याद रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर करना तो भी आपको याद रहना चाहिए। एनीवे, सो फर्स्ट इज दैट E अभी हमने सबसे पहले निकाला A इज इक्वल टू E माइनस टी। E वी नो दैट RT स्क्वायर डी बाई डी टी नेचुरल लॉग ऑफ Q एंड V। अभी हम सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर के रूप में करेंगे, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे मोलर और कैनोनिकल। और एस अभी आपके सामने अभी हमने निकाला, एस इज इक्वल टू ई बाई टी प्लस आर नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। और इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ई हियर, तो फिर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने ये 2
फॉर्मूला। सो अब पहले हम E का लगाएंगे, here we'll substitute and then we'll write the S and just solve it. So first it is just like 2 minutes problem. So A is equal to RT square d dt natural log of Q minus T कहाँ से आया, this T F R natural log of Q plus RT natural log of Q. So you know that if I solve it, so what I will get, these T's and this T. So what it will get? It will get RT, it must be. It must be constant volume. So R T square. Okay, it is R T square dy dt natural log of Q constant. Here is minus, here is plus, so it will cancel. So only thing is that this T R T natural log of Q. Of course minus. तो कितना समय आपको लगा, ओनली 2 मिनट। अगर इसी को हम उस फॉर्म में लिखेंगे, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, सो A इज इक्वल टू माइनस K T natural log of Z from book of the Levine. इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि देयर आर मेनी गुड बुक्स आर अवेलेबल। स्टूडेंट्स को टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, क्लैरिटी एंड नॉवेल्टी, आई एम जस्ट यूजिंग द ब्लैक बोर्ड ताकि आपको समय कम लगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इट इज नथिंग बट ओनली द सब्स्टिट्यूशन A इज इक्वल टू E माइनस TF. I am doing nothing, I just substitute these values of E and substitute the values of S in terms of molecular partition function. Of course this T is here, यहाँ पे T square हो गया, यहाँ पे तो RT रह गया, this part is this cancel, so you will get these values of RT natural. अब मैं आपसे पूछूं कि can you with the help of A can you calculate the pressure? Yes you can, because pressure is equal to change in Helmholtz free energy with respect to volume at constant temperature. You just substitute this value. So what I will get? So we will get the pressure value like that. Now I am coming to the last point, that is the, I think, free energy determination. So okay, just for the clarity of the student, same thing I am just repeating for that canonical partition function. So same thing, in place of R I have written this A. In place of small q I have written this Z. You always remember this, always, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल मत भूलिए। डिस्टिंग्विशेबल का भी अलग होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अगर हम लॉग फॉर्म में भी लेंगे तो आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल Q n natural log of Q minus natural log of n factorial, and then n factorial natural log of n factorial. तो आप जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन, n natural log of n natural log of n minus n. So there are so many system is there, total number of molecules and other things, but always remember that वो per mole होता है और ये one molecule के लिए हम कर रहे हैं, but system is composed of large number of molecules. Again, this is a student friendly method. So there is no difference. K is equal to minus KT natural log of Z. और इसके पहले आपने देखा A is equal to minus RT natural log of Q, molar partition function. So some numerical problem may be asked in university system, that the values of partition function they will give, and then you have to determine the values of A. What does it mean? That means it is just like a wave function, like in
quantum mechanics, but we are talking about the statistical thermodynamics. This is one of the most important parameters, partition function. You have seen that there are many methods by which any macroscopic properties can be determined, but precisely, accurately, with the help of partition function, one can determine any type of thermodynamic parameter. Okay, so last part is the Gibbs free energy, and you know that G is equal to H minus Ts. H is the enthalpy. Enthalpy can also be determined. Today I will not determine the enthalpy. So we know that H is equal to E plus PV. H is equal to E plus PV. Enthalpy is equal to E plus PV. I am not talking about the change in enthalpy. That is different. Delta H is equal to delta E plus P delta V. So if I write H is equal to E plus PV, and here I am getting E प्लस PV माइनस TS, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, E माइनस TS प्लस PV, और ये E माइनस TS ये होता है A. तो आपका क्या फॉर्मूला आया? G is equal to A plus B. What I mean, in some books I have seen that actually G minus G, क्योंकि रेफरेंस के साउंड में लोग निकालते हैं टेम्परेचर में, और H माइनस H0 भी लिखते, ये माइनस H0 भी लिखा जाता है, बट लेकिन मैंने आपको बताया ना, स्टूडेंट के सिंप्लिसिटी के लिए मैं बहुत सिंपल कर दिया हूँ. सो व्हाट आई विल डू नथिंग बट इन प्लेस ऑफ ए का वैल्यू अभी आपने 2 मिनट पहले आपने निकाला, एंड ए इज इक्वल टू, यू नो दैट माइनस KT नेचुरल लॉग in terms of canonical. I have a separate lecture for whole partition function. What is partition function? What is the difference between molecular, molar partition function? That is different. But here I am just only concentrating only the application of partition function or the determination of thermodynamic function. So can we Z A is equal to minus R. एक मोलर का निकाला है, एक मॉलिकुलर का निकाला, तो G इज इक्वल टू, कुछ नहीं रखा है वैल्यू. अब यहाँ पे आप और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपके सामने इसको छोड़ दे रहा हूँ. आई कैन राइट हियर P वैल्यू. P अभी आपने उससे पहले आपने देखा, आपने निकाला हम लोगों ने, RT और KT dy dV नेचुरल लॉग ऑफ P. So you can write like that. You can write like that. If I write RT dy dt, also be written like that. So RT natural log of Q like KT natural log of Q. Here is also minus, and just PV. In some books it is also PV is equal to RT nRT. In some books Kn KT nKT. But this is the simplest. That is, or you substitute the values of pressure here. I think I have already solved it. अब एक लास्ट इसमें something, you know that there is a very important parameters in thermodynamic parameters which is called the chemical potential, partial molar free energy, with respect to number of moles, which is the driving force for any chemical reaction. So therefore that can also be determined, because again now we know the values of pressure, we know the values of A. So what I do, mu is equal to, chemical potential is equal to, formula is change in Helmholtz free energy with respect to number of moles at Tn, and this A is equal to minus RT natural log of Q or minus KT natural log of Z. So what I write, this chemical potential is equal to minus RT d natural log of Q and dN. Somewhere, because what happened, there may be other, we are talking about the chemical potential, मतलब change in number of moles. कई बार आप देखेंगे कुछ बुक्स में ये लिखा रहता है
d of natural log of z, and here is dnb, because that is equal to dna is equal to dnb divided by na, nb like that. एनबी को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये कई बार यहाँ पे भी माइनस आर टी ऐसा भी लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल, बट सिंपली अगेन इट इज ए सब्स्टिट्यूशन। एंड सिमिलरली अभी आपने प्रेशर में थोड़ी देर पहले आपको बताया, so that is another formula is also there, that pressure is equal to change in Helmholtz free energy with respect to volume. So I know the formula, that is RT natural log of Q. So d by dV natural log of Q, RT d by dV natural log of Q at constant volume can be determine the pressure. So I think I should complete here. It is a very, very small, I think 5 minutes or 10 minute program lecture, that again I am just repeating all these things, that starting from free energy, and I determine the first is the Helmholtz free energy, which is very important, and therefore I substitute the values of E and S, and I am getting this final formula, very small formula, but that is a canonical and molecular. And then for G, from that A, we can determine here. But I am not using that other part is also there. That is, if I just substitute these values of P pressure, so that formula भी slightly changes. But मैं आपके मतलब क्लैरिटी के लिए एकदम सिंपल P लिख दिया। P के जगह में आप वैल्यूज आप डाल सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। इस तरह से आज हमने इस लेक्चर, छोटा सा शॉर्ट लेक्चर में फ्री एनर्जी का दोनों का देखा, और उसके साथ साथ केमिकल पोटेंशियल प्रेशर की निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि और जितने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स बच गए हैं, मान लीजिए जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पार्टिशन फंक्शन वेरी एक्यूरेटली, so I'll try to deliver the another lecture. So I have more or less I have completed your whole thermodynamics, statistical thermodynamics lecture, where I have already derived all those Maxwell-Boltzmann statistics, Fermi-Dirac, and Bose-Einstein. All the partition function I have covered: translational partition function, rotational partition function, vibrational partition function, and last part is some symbolic thermodynamic parameters. I am really grateful to the mathematics department, particularly that facilities of the universities. There is a lecture capturing facility, and I am really grateful to Professor Balwant Singh Thakur, Dr. Dikti Thakur, and another student Indra Kumar, and my research scholar Mr. Abhishek Kassendra, for helping me in preparing this video lecture. Thank you very much.